Unacademy. Let's crack it. Hello friends, I am Dr. Rajesh Mohan and I have secured All India rank 102 in UPSC Civil Services 2020 exam. UPSC has declared the result for Prelims 2021. I congratulate all those students who have been able to make it to the mains and are writing the mains. This is a golden opportunity because Prelims is becoming dicey. Now you are having 70 days to show whatever you have learned for the whole year. So इन 70 दिन को आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा और इस टाइम मैनेजमेंट के लिए बिगेस्ट इशू दैट स्टूडेंट्स फेस इज हाउ टू बैलेंस ऑप्शनल एंड जनरल स्टडीज. In this video, I would be telling my experience and my advice how to balance the two things. I would say that there are 70 days. You divide it into first month and the second one. First 30 days and then 40 days. Now, within that month, you divide your strategy in week wise. You take week as a unit और उसको divide करो some part to optional, some part to general studies. Now the ratio will change month wise. Why I say that you should follow a weekly strategy instead of the daily one? Because अगर आप वीकली किसी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, एक दो दिन उसको पढ़ रहे हैं, उसके कारण आपको लगेगा यस मेरा सिलेबस इतना इतना कंप्लीट हो रहा है. सो दैट्स वाई आई से यूज फॉलो अ वीकली स्ट्रेटजी. इन फर्स्ट मंथ आई यूज टू डिवाइड माई वीक into 5 days for optional, 2 days for general studies. Why I used to do that is because optional is static. अगर आपने एक बार कर लिया तो वो उसके अंदर नई डेवलपमेंट्स बहुत ही रेयरली होती हैं. सो दैट्स वाई आई विल से कि 5 दिन आप ऑप्शनल को दो और 2 दिन जनरल स्टडीज़ को दो और जनरल स्टडीज़ में भी उन सब्जेक्ट्स को कवर करो जो कि प्रीलिम्स में कवर नहीं हुए हैं और मेंस में आए हैं. फॉर एग्जाम्पल एथिक्स पेपर 4 को ज़्यादा एम्फेसिस दो. सेकंड इज दैट इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पेपर 3. देन थर्ड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ पेपर 2 एंड देन इंडियन सोसाइटी ऑफ पेपर 1. So for first month this should be the strategy. For the second month you should change it. You should increase it the number of days for general studies. Why? Because at that point of time you would be getting all the compilations. सारे करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन उस टाइम पे मिलने लगेंगे तो उसको उस टाइम पे आपको जनरल स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. सो यू कैन डिवाइड 4 days फॉर जनरल स्टडीज़ एंड 3 days फॉर ऑप्शनल. So this way you can manage and balance the two things. So I hope my advice would help you and it would enable you to manage time properly and balance optional and general studies for the forthcoming time. In the end, I would like to give my best wishes to those who have made it to the mains. I hope you achieve your dream this time. Thank you.